Okay, is it audible now? Hello Siddharth, how are you? So am I audible now? Yes, all right. Chalo, let's start. Let's start it again from question number 51. Okay. No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer. These provisions come under rule against retrospective transfer, rule against perpetuity, rule against prospective transfer, or none of the above. What will be the correct answer? Question number 51. Yes, Atharva, Siddharth. All right, both of you are saying B is the correct answer. Chalo, great. B, rule against perpetuity. Good. Let us move on to question number 52. Which one of the following is an exception to rule against perpetuity? है ना, इसका exception कौन सा रहेगा? Permanent transfer for gift, personal convenience, या फिर preemption, या all of the above? What will be the exception? Okay, again Siddharth. Good. D. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल टू अ केस वेयर रूल अगेंस्ट परपेचुटी कौन से केस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी purport to be effective beyond minority of ultimate transferee who is not in existence at the date of transfer, या फिर contingent interest are created by transfer. तो सिद्धार्थ का ऑलरेडी आंसर आ चुका है बिफोर फिनिशिंग माय ऑप्शंस. 53 का यू आर सेइंग ए. ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट अथर्व? व्हाट इज योर आंसर? यू वांट टू कंट्रीब्यूट योर नॉलेज? यस. ओके, अथर्व इज सेइंग सी, that is transfer of property purport to be effective beyond minority of ultimate transferee who is not in existence. See, it is talking about rule against perpetuity. एक बार फिर से आप पढ़िए ना ऑप्शंस को. द करेक्ट आंसर विल बी ए, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. ऑलराइट, वहां पे परपेचुटी नहीं अप्लाई होगी. See, there are some exceptions to section 14 and this is one of that exception. तो यहाँ पे rule against perpetuity will not be applicable. Next, which reference to Transfer of Property Act Ram Baran versus Ram Mohit AIR 1967 Supreme Court 747 is a case for? ये केस किससे रिलेटेड है ना? नेमो डेट कॉर्ड, नॉन हैबिट, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, इलेक्शन या ईजमेंट? चलो तुक्का मार लो इसमें. तो यस, गुड. बी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, है ना? तो राम बरान वर्सेस राम मोहित, याद रखिएगा, दिस इज अबाउट रूल अगेंस्ट परपेचुटी. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज वाज रिकॉग्नाइज्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? क्लासरूम्स में भी हम बार बार ये केस लॉ पढ़ते हैं. रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज इज मेंशन्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? यस, एनीवन? 55 का बी. गुड. विडबी वर्सेस मिशेल. गुड, वेरी गुड सिद्धार्थ. अथर्व इज अ बिट स्लो. अथर्व, हरी अप विथ योर स्पीड. फटाफट से आंसर दीजिए. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन मेड डायरेक्टली, है ना? मेड डायरेक्टली. वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या अ गुड एंड अ फोरसाइटेड मूव? 56 का आंसर बताइए. ओके, गुड. बी, वॉइड. वेरी गुड. नेक्स्ट चलता है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 17 ऑफ टीपीए इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? दी सेक्शन 17 कौन सा है, पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा. तो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? एक्यूमुलेशन की बात करता है ये. तो वो किससे रिलेटेड है? सेक्शन 17. क्वेश्चन नंबर 57. ओके, 57 का सी, हेलुसन वर्सेस वुडफोर्ड. गुड. या सॉरी, नॉट एक्सेलरेशन बट एक्यूमुलेशन. गलती से हो गया ना, एक्यूमुलेशन से बात करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट. Provision of longer period in the matter of accumulation of property under section 17 of Transfer of Property Act amounts to?
प्रोविजन ऑफ लॉन्गर पीरियड इन द मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू, कितना पीरियड, लाइक कितने से ज्यादा होना चाहिए ना, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स या 25 ईयर्स। 58 का ऑलरेडी गिवन आंसर 18 ईयर्स। गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द प्रोविजन ऑफ सम सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी। तो वो सेक्शंस कौन कौन से हैं जो पब्लिक के लिए अप्लाई नहीं होंगे ना? एक तो सी 14 सब में आ चुका है, वी नो सेक्शन 14 तो है ना। बाकी रेस्ट में आप बताइए। यस, ओके, सिद्धार्थ का आंसर आ चुका है 14, 16 एंड 17। गुड। सो सिद्धार्थ 14 एंड 17 वी नो है ना, परपेचुटी एंड एक्यूमुलेशन। 16 क्या है? कैन यू टेल मी सेक्शन 16 कौन सा है? ए बाय सेटलमेंट डी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू पी। ऑलराइट, ए क्या करता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है पी को बाय सेटलमेंट डीड्स। मैम मेरा नेट स्लो है, ओके। फॉर लाइफ देन टू एस, ओके, एंड देन टू एस, इसको फॉर लाइफ एंड देन टू एस। एस डाइज बिफोर पी डाइज। नाउ एस डाइज बिफोर द डेथ ऑफ पी। On the death of P, the heir of S claims the property. Is the claim valid? 16 is transferred to take effect on. Very good. Good. 60 पे आ जाइए। 60 क्या है? बताइए, क्या जो S के heirs है वो क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी? यस, गुड, वेरी गुड। ओके, सिद्धार्थ का आ गया। प्रशांत इज हियर। भाई नेट के साथ तुम भी स्लो हो। नहीं नहीं, सिर्फ नेट स्लो है। वी कैन अंडरस्टैंड। Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect, है ना? इंटरेस्ट आप दे देते हो बिना स्पेसिफाई किए कि वो इंटरेस्ट कब इफेक्ट में आएगा, और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट forthwith or on the happening of an event which must happen. नाउ इसे आप देखिएगा, विच मस्ट हैपन, तो इसका आंसर क्या होगा 61 का? कंटिंजेंट या वेस्टेड? ओके, सिद्धार्थ का आंसर आ चुका है। What about the rest? प्रशांत का भी आ गया। गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज बी। सी, जहां पे हो ना श्योरिटी है कि भाई उसको इंटरेस्ट मिलना ही है, तो दैट विल बी वेस्टेड इंटरेस्ट, मस्ट हैपन। नेक्स्ट, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हेन कैन एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट? अपॉन हिज बर्थ, अपॉन कंप्लीटिंग द मेजोरिटी, अपॉन हिज मैरिज, या नन ऑफ द अबव? 62 बताइए। ओके, वेरी गुड, upon his birth. So Siddharth is like very high speed today. Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event. Specified uncertain event, right? अब इसका आंसर दीजिए। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, कंटिंजेंट, वेस्टेड, या नन ऑफ द? ओके, वेरी गुड। यस, अगेन सिद्धार्थ। प्रशांत के नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ। प्रशांत, यू कैन रेज योर स्पीड नाउ। Contingent interest in the property become a wasted interest on the happening of an uncertain event, or when the happening of the event becomes like possible, impossible, probable to happen, या all of the above? 64. Okay. So again Siddharth, yes, it is B. Event becomes impossible. Good. Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event. The transfer is, yes, 65, uncertain event. Good. Which one of the following is not correctly matched? Okay, Prashant, it was contingent, है ना? Uncertain event था। See, oh, okay, uncertain, you know, right? इस पे आ जाइए। Which of the following is not correctly matched? Rule against perpetuity, section 14, contingent is 21, wasted 19, and conditional 24. Yes, good. B, है ना? कंडीशनल ट्रांसफर 24 में नहीं है, तो फिर क्या आप बता सकते हैं किस में है कंडीशनल ट्रांसफर? विच सेक्शन? सेक्शन 25. ऑल राइट,
of the Transfer of Property Act deals with, yes, 25, right? Next आ ही गया. Section 25 of the Transfer of Property Act deals with condition precedent, subsequent, collateral या precedent and subsequent both. Very easy. Yes, इसका आंसर दीजिए. That's a very easy question. Okay, as per Siddharth, it is condition precedent. All right, 25 precedent की बात करता है, हाँ? Not subsequent. Prashant, what do you think? 67 का आंसर. Siddharth, are you sure that it is talking about condition precedent? Okay, Prashant, चलो confused हो गए. The correct answer is A only, है ना? Condition precedent. Subsequent नहीं fall करता. Only precedent आता है 25th में. इसको ध्यान रखिएगा. Next आ जाते हैं 68. A lets the farm to be on condition that he shall walk 100 miles in an hour. Now, the lease is void under which of the section? 23, 24, 25 and none of the above? 68. Good. Very good. C. 25 जो हमने already पढ़ रखा है. Which of the following is the example of valid conditional transfer? है ना, इनमें से कौन सा valid conditional transfer है? 100 miles in an hour या फिर that she shall murder C, that if she will desert her husband, या फिर that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death. Yes, good. D. है ना, सामने ही पता चल रहा है ये. Which of the following would be a valid transfer under the Transfer of Property Act? इनमें से कौन सा will be a valid transfer? 70 पे आ जाइए. प्रशांत, come on, स्पीड बढ़ाओ अपनी. 70 का D. ओके, सिद्धार्थ का आंसर आ गया 70 का D. He shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marriage with the consent of C and D. All right. And on a condition that she shall murder C. Okay, good. D. Next 71. A gives rupees 500 to B on a condition that B shall marry A's daughter G. All right. On the date of transfer, G was dead. The transfer is void under which section of Transfer of Property Act? 71 का आंसर दीजिए. सेक्शन 71. ओके, सिद्धार्थ का आ चुका है AES 25. गुड. नेक्स्ट आ जाते हैं. A transfer rupees 5,000 to his niece B if she will desert her husband. The transfer is, that's a very easy question again. The transfer is, yes. Okay, good. So finally प्रशांत का पहला आंसर आ चुका है before सिद्धार्थ. Next, in case of a transfer depending on a condition precedent, the transfer take place when the condition is, है ना, when condition precedent होता है तो condition को कैसे follow करना होता है? Partially, strictly, substantially या wholly? That's a very easy question. Check करो, मेरा पहले आया. All right. See, प्रशांत का आया ना, B पहले आ चुका है उनका already. 73 का बताइए. Yes. Okay, good. Siddharth's answer is correct. Substantially fulfilled. है ना प्रशांत? It is substantially. भाई टेलीग्राम पर नहीं हो रहा पेपर. Under the Transfer of Property Act 1882, A transfer rupees 5,000 to B. Yes. Okay. Next आ जाइए इस पे. 74th. अभी इस पे फोकस करिए. Come on. Now you can raise your speed. Under the Transfer of Property Act 1882, A transfer rupees 5,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marriage with the consent of C and D. The transfer is good. Yes, finally. See, now Siddharth, you can check. Although अभी तक सिद्धार्थ इज लीडिंग, काफी आंसर्स आ चुके हैं उनके, है ना, बट अभी सी 75th पे ही है हम. आई हैव टोटल 133 क्वेश्चंस. So let's see. X transfer rupees 5,000 to Y on condition that he shall marry with the consent of A, B and
C. Why married without the consent of A, B, and C but obtained their consent after the marriage? Why has fulfilled, not fulfilled, substantially complied with, या none of the above? 75th का आंसर. Alright, B आ चुका है. Good. Not fulfilled the condition. नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ए ट्रांसफर अ फार्म टू बी फॉर हर लाइफ एंड इफ शी डज नॉट डिजर्ट हर हस्बैंड, बी इज एंटाइटल्ड टू द फार्म ड्यूरिंग हर लाइफ एज इफ नो कंडीशन हैज बीन insisted. A transfer rupees 50,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C, D and E. B marriage without the consent of C, D and E but obtain their consent after the marriage, the condition shall be deemed to be fulfilled as it has been substantially complied with. Now C and D आप लोग पढ़ लीजिए एंड आंसर कीजिए 76th का. Okay, both are saying B. The condition shall be deemed to be fulfilled as it has been substantially complied with. See, ये तो वही हो गया ना, पुराना वाला ही तो हुआ B. Okay, not correct. All right, yes, B is the correct answer. Sorry, मैंने question नहीं पढ़ा. Yes. Next, provision based on doctrine of acceleration under the Transfer of Property Act is doctrine of acceleration किसमें है? 77th. Very easy question. Yes. Doctrine of acceleration. Good. C. Yes, Siddharth. Very good. Next, A transfer rupees 500 to B on condition that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so, to C, B dies in A's lifetime. A transfer rupees 500 to B, है ना. A rupees 500 transfer करता है B को on a condition that he shall execute a certain lease within 3 months. 3 month में उसको execute करना है after A's death, A की death के बाद. नेक्स्ट आ जाता है इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो टू सी. अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करता 3 मंथ में तो वो चला जाएगा सी को. नाउ बी डाइज इन एज लाइफ टाइम. अब बी की डेथ हो जाती है ए की लाइफ टाइम में, तो क्या होगा? द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी. अच्छा, आंसर्स आ चुके हैं ऑलरेडी. यस, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना. द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी टेक्स इफेक्ट डेफिनेटली. नेक्स्ट चलते हैं. ए ट्रांसफर रुपीज 5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ लीज विद इन 3 months आफ्टर एज दैट एंड इफ यू शुड नेग्लेक्ट तो सी को. बी डाइज इन एज लाइफ टाइम. विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट shall apply in deciding the legal right of C? Very easy question, like 79. Yes, D. Acceleration. Okay, कि एक को नहीं मिलता है तो उसके बाद नेक्स्ट को चला जाएगा. A transfer a farm to B for his life with a proviso that in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect. Cease to have होगा यहाँ पे. The transfer shall cease to have any effect. B cuts down the wood. What will be the effect of his life interest of farm? Yes, 80. 80 का answer. Okay, Siddharth is saying C. Prashant, what is your answer to this question? 80. C. मैं फिर से समझा देती हूँ आपको. A transfer a farm to B for his life with a proviso that in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect. Then क्या होता है? B उसे काट देता है. What will be the effect of his life interest of farm? Okay, good. It is A. उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, है ना. इसका इंटरेस्ट क्यों जाएगा ना? बिकॉज यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट. पूरे ट्रांसफर का इफेक्ट ही सीज हो जाएगा, तो कंडीशनल लॉस नहीं हो रहा है, उसे पूरा उसका इंटरेस्ट जा रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नाउ दिस वन इज फॉर यू. Accumulation 17, contingent 21, fulfillment of condition subsequent 30, and priority of right created by transfer section 48. Not correctly matched. 81. Yes, good. C. Fulfillment of condition subsequent. Which of the following deals with the doctrine of acceleration? The easiest question.
टिप्स पे होना चाहिए ये वाला तो लाइक फटाफट से 82 का आंसर दीजिए 82 यस ओके गुड डी Which of the following provision of the Transfer of Property Act provides that a person taking the benefit of instrument must also bear the burden? है ना एक पर्सन जो किसी इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट ले रहा है वो उसका बर्डन भी बियर करेगा किसमें लिखा हुआ है 35 34 33 या 32 83 ओके A man is not allowed to approbate and reprobate at the same time. This rule provides basis for which of the following like grant by estoppel part performance election या redemption of foreclosure down very easy question 84 का C yes doctrine of election है ना doctrine of election comes under the chapter of transfer of property act which chapter 7245 85 doctrine of election कौन से chapter में आता है yes 85 85 का y okay y b okay chapter 5 में आता है no it is chapter 2 okay chapter 2 yes it is b अच्छा ओके नाउ आई गॉट टू नो है ना जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में बी का वी हो रहा है ओके नेक्स्ट आ जाइए द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन under the Transfer of Property Act is that a person taking the benefit of an instrument must bear the burden, must not bear the burden. Burden is not subject of election या none of the above. Very easy question. Yes, A. Good. Must bear the burden. Next आ जाते हैं the doctrine of election is applicable to Hindus, Muslims, Christians या all of the above. Doctrine of election किस पे applicable होगा? Hindus, Muslim, Christian या all of the above? Good. D. All of the above. Next, if the owner of the property elects to dissent from transfer under Section 35 of Transfer of Property Act, the disappointed transfer is entitled to be compensated when, है ना? जब owner अगर मना कर देता है, okay, owner of property elects to dissent from the transfer, ट्रांसफर से मना कर देता है वो कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए अपना ट्रांसफर नहीं करवाना उसको तो उस केस में जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही होगा उसे क्या मिलेगा द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूस एंड द ट्रांसफरी डाइज बिफोर द इलेक्शन नेक्स्ट द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूस एंड द ट्रांसफर बिकम्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफर बिफोर द इलेक्शन द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन या ऑल ऑफ द अबव ओके आप लोग कह रहे हैं 88 का ऑल ऑफ द अबव डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी अगर ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर होगा तो विल ही बी एबल टू बी कॉम्पेंसेटेड यस 88 एक बार ये ऑप्शंस फिर से पढ़िए सारे है ना ऑप्शंस वापस पढ़िए एक बारी यस 88 श्योर यू गाइज आर श्योर 88 का डी यस इट इज डी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी दैट्स इट है ना इट इज डी मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम ILR 843 is a leading case on which of the following यार ये आप लोग यूं ही बता दोगे लाइक जो फ्लो चल रहा है उनमें से ही होगा राइट ऑब्वियसली 89 89 का गुड द प्रोविजन रिगार्डिंग apportionment of by time is given under which of the following section of the Transfer of Property Act है ना apportionment by time ये किसके अंदर given है मिक्स करके पूछ लीजिए ना ओके डेफिनेटली इसका आंसर बताइए apportionment by time किसके अंडर given है 35 36 37 या 38 yes 36 गुड
अच्छा 37 में क्या है फिर, है ना? 36 में इफ इट इज बाय टाइम, देन आप लोग ही बताइए कि 37 में क्या है। तो इस तरीके से थोड़ा लगेगा कि ओके योर गाइस आर प्रिपेयरिंग और नॉट, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्लो में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। 37 क्या है? इफ इट इज बाय टाइम, 36 इज बाय टाइम, देन 37 इज अपोर्शनमेंट बाय और बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन। वेरी गुड सिद्धार्थ। ओके नेक्स्ट आ जाइए। सेक्शन 37 of the Transfer of Property Act on right to proceed of revenue compensation or acquisition is based on election, substituted security, contribution या marshalling। 37 किस पे based है? That's a very easy question। 91। Yes, 91 का you're saying D, that is doctrine of contribution। Okay, anyone else? Prashant? Okay, yes, D is correct, doctrine of contribution, right? A has let house A has let house at a rent of ₹100 payable on the last date of each month। Okay, एक हाउस उसने रेंट कर दिया, हर महीने के लास्ट में उसको ₹100 पे करना है। A sells house to B on the 15th of June। On 30th June, what will be apportionment? A will get ₹100, B will get ₹100, A 50, B 50, या the tenant will be exempted from payment of rent in that month। tenant को ही exempt कर दिया। Okay, as per you, A का 50 and B का 50 है ना? 92। You are saying A का 50, B का 50। Good। A transfer of property by ostensible owner for consideration। Ostensible owner for consideration। Void, valid, shall not be voidable provided the transferee acted in good faith, shall be voidable। 93। I think कुछ tricky होगा ये, चलो यार। You have a very good preparation। The case of Jayadayal Podar versus BB Hazara is related to। बहुत बार सुन चुके हैं इस केस को। 94। यस, जयदयाल पोदार वर्सेस बीबी हजारा। गुड, ऑस्टेंसिबल ओनर। Section 41 of the TPA Act is the statutory application of the law of waiver, estoppel, res judicata या res sub judice। Now, I think कुछ अलग आया है ना? बट इजी है, ये भी इजी है, थोड़ा अलग है बट इजी है। यस, 95 का बी estoppel। ओके, डू यू नो द डॉक्ट्रिन 41 को किस डॉक्ट्रिन से बुलाते हैं? नाम क्या है उसका? Ram Kumar Kundu versus McQueen is related to list pendants, ostensible owner, part performance या mortgage। 96। Good, B। Section 41 of the Transfer of Property Act applies to voluntary transfer as in the hand and has no application for court sale, contingent sale, perpetuity sale या priceless sale। Section 41 of Transfer of Property Act applies to voluntary transfer and has no application to। इनमें से किस पे इसका एप्लीकेशन नहीं होगा? नहीं पता बता दीजिए प्लीज। 41 का डॉक्ट्रिन। अच्छा, आपने सुना फीडिंग ग्रांट बाय एस्टोपल? दैट इज सेक्शन 41 है ना, फीडिंग ग्रांट बाय एस्टोपल। आई थिंक वो 43। तो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट सुना तो है आपने, फिर हाउ डू यू नो वो 43 का है? 41 जो है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, राइट? एंड 43 जो है उसे कहते हैं फीडिंग ग्रांट बाय एस्टोपल। ऑलराइट, चलो इसको आ जाइए 41 को। कोर्ट सेल, कंटिजेंट सेल, परपेचुटी सेल या प्राइसलेस सेल? ये माइंड से स्लिप हो गई होल्डिंग आउट वाली। ओके
Yes, yes, A. Good. Court cell. Principle laid down by the Privy Council as to the constructive notice of the real title as provided in Section 41 was reaffirmed by the Supreme Court in 98. Was reaffirmed by the Supreme Court in सैयद चुनचुन जुम्मा मस्जिद वाला केस या राम बरान प्रसाद 98C. गुड. अच्छा, आपको एक्चुअली ये सारे केस लॉज याद है, लाइक कुछ ट्रिक है? यू हैव सम अदर ट्रिक? Which of the following is a case involving Section 41 of Transfer of Property Act? इनमें से कौन सा केस is involving Section 41? Doctrine of holding out. ओके, सारे सेक्शंस के साथ रट लिए. चलिए इसका बताइए. 41. Okay, so we have someone new. Yes, legal jurist A. Good. A is the correct answer. Suraj Ratan Terani. Next आ जाते हैं. Rule of feeding the stopple is contained in. Yes, very easy question, which we have already discussed. बताइए. 100 का. Good. C. Section 43. Next are Section 43 of the Transfer of Property Act, which deals with transfer by unauthorized person who subsequently acquire interest in immovable property transferred. Underlying doctrine of estoppel by deed, actionable claim, estoppel by election, a right of preemption. 101. Okay, yes, it is B. Estoppel by deed. Yes, legal jurist, Section 43. Now, 102. Where a person transfer property representing that he has a present interest therein. All right. आगे आता है. Whereas he has in fact only a spec successions, the transfer is entitled to the benefit of Section 43 if he has taken the transfer on the faith of that representation and for consideration. तो ये प्रिंसिपल बेसिकली कौन से केस में लेट डाउन किया गया है? यस, जुम्मा मस्जिद. गुड. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ना ये केस. Section 43 of the Transfer of Property Act enables a transferee to whom a transferor has made a fraudulent or erroneous representation to lay hold at his option of any interest. Yes, 103. Okay, nice, Siddharth. Very good preparation you are having. A Hindu who has separated from his father B sells to C three fields X, Y, and Z, representing that A is authorized to transfer these fields. Z does not belong to A, but on B's death, A obtains Z. C did not resign the contract. The contract became infructuous. C may require A to deliver Z to him. Contract is void या contract is unenforceable. C may require A to deliver Z to him. Good. अच्छा, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? लाइक कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर फॉल करता है? डू यू नो? Good. The principle of estoppel, enunciated in Section 115 of the Evidence Act, find its expression in these three sections or in these sections of the transfer of property. Okay, again, very easy question. 105, yes. Yes, it is B, 41 and 43. Achha, now can you tell me one thing? What is difference between principle and doctrine? Like what is difference between these two terms, principle and doctrine?
है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनवाइल ए को-ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में टेक अ, है ना, जो को-ओनर होता है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कैसे ले सकता है? वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनली कैन गिव पोजेशन, only can give right to use for a short period, cannot make transfer of that property. A co-owner of immovable property. 106 पे आ जाइए. 106, yes. नहीं, 106 का valid transfer of property. Yes. Next, where immovable property is transferred for consideration. अच्छा, difference नहीं पता. All right. So legal jurist, do you know the difference between doctrine and principle? Yes. Where immovable property is transferred for consideration by persons having distinct interests therein, but their interests in the property are of equal value, the transferor are entitled to get equal share, entitled to get unequal share, entitled to get equal share subject to further transfer, या फिर none of the above. का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 107 का. It's a very easy question. Yes, A. Good. The doctrine nemo dat quod non habet under the Transfer of Property Act is applied to which of the following sections? 108. 108 पे आ जाइए. Yes, it is A. Next आ जाइए, under section 52 of Transfer of Property Act, the transferee will be bound by the result of the suit. Okay, so you guys are saying it is D, whether the transferee has knowledge or not as to the litigation. Yes. Good. Yes, yes, exactly. Next question. 111. Yes. ऑप्शन ऊपर नीचे है. हाउ? ऑप्शन करेक्ट है ना? फॉल्स, ट्रू, पार्टली ट्रू, नन ऑफ द अबव. 110 में. ओके. आई थिंक 100. ओके, वो 109 एंड 110 था. 111 पे आ जाइए आप लोग डायरेक्टली. सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना? यस. बी. ट्रू. गुड. नेक्स्ट आ जाइए, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस इज एक्सप्लेन्ड इन फेमस केस ऑफ. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस कौन से केस में एक्सप्लेन किया गया था? बेलामी वर्सेस सबे. वेरी गुड.
The doctrine of lis pendens applies where the suit is collusive, the transfer is made after the decree of the trial court but before the filing of an appeal. Right to movable property is in question. Property is situated outside the territorial jurisdiction of the court. 113. 112 is already done. 113 पे आ जाइए. Yes, legal juris. Good. B. The transfer is made after the decree of the trial court. Yes, good. So legal juris, what is your name like? By what name I should call you? Yeah, legal jurist ही बुलाए. Which one of the following is not an essential condition for application of rule of lis pendens under section 52? है ना? Which one of the following is not an essential condition for the rule of lis pendens? Pendency of a suit or proceeding, pendency in a competent court, suit must be collusive, या फिर alienation must affect the rights of the other party, which is not an essential condition. 114. Good, very good. See, every transfer of immovable property made with intent to defeat the creditors of the transferor is. Every transfer of immovable property made with the intent to defeat the creditors of the transfer is voidable at the option of any creditor. So defeated, voidable, void ab initio, voidable at the option of transferee. That's a very easy question. Yes, hurry up with the answers as it is very easy question. 115. 115 पे आ जाइए. Yes, it is A. Voidable at the option of any creditor. So defeated. No, it is A. Legal juris, it is A. 53 देखिए ना, सेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है. ओके, सेक्शन 53 को रेफर करिएगा. The doctrine of part performance cannot defeat the right of a transferee for value, gratuitous transferee for value if he has notice of the contract on his or of his part performance, transferee for value and without notice of the previous contract or of its part performance. 116. Again a very easy question. Yes. 16 पे आ जाइए, come on. C or D? Okay, good. It is D. Prabodh Kumar Das versus Dantamara Tea Corporation Limited case is related with the following doctrine: election, lis pendens, part performance या priority. 117. It is part performance, okay? Which is not the ingredient of section 53A of transfer of property. Now this is like actually some question, good question. का आंसर बताइए. 118. Not a ingredient of section 53A. Part performance का ingredient कौन सा नहीं है among these ones? 118. Yes, 18th का agreement for transfer consideration, transferee has performed his part या फिर movable property. Good. Yes. Next आ जाइए. To apply the doctrine of part performance laid down in section 53A of Transfer of Property Act, no, Siddharth, it was D. And movable property is not an ingredient to that. अच्छा, 119 का आप बता रहे हैं. Okay. To apply the doctrine of part performance laid down in section 53A of the Property Act, the contract must be for value, not gratuitous. The transferee must be always ready and willing to discharge his part of obligation. The contract must be in writing and signed by the transferor, and the terms and conditions must be certain. 119 का आप C बता रहे हैं. Okay, it is D, है ना? All of the above. Cooper versus Cooper relates to, again, a very easy question.
कूपर वर्सेस कूपर, 120 पे आ जाइए। वेरी गुड, बी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ना आपको एक केस याद है, मनी वर्सेस मनी? मनी वर्सेस मनी किसी को याद हो तो? ट्रांसफरी ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस हैज राइट टू प्रोटेक्ट हिज पोजीशन, है ना? इसका आंसर बताइए। रॉन्ग, राइट कैन अक्रू ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, राइट या डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नॉट नेसेसरी। 121, यस, मनी वर्सेस मनी कौन से, लाइक किसका केस है, रिलेटेड टू व्हाट, इफ यू नो द आंसर? मीनवाइल 121 पे भी बताते रहिए 121 किससे रिलेट करता है। Wrong, right can accrue only after payment of full consideration, right या delivery of possession is not necessary. 121, okay, you're saying delivery of possession is not necessary. एक सौ इक्कीस का D. Siddharth, what is your answer? It is right, है ना? उसका right होता है definitely. Next, under Transfer of Property Act, which one of the following is not correctly matched? Yes, C, good. Under Transfer of Property Act, which one of the following is not correctly matched? Now ये सामने ही दिख रहा है that which one is not correctly matched. 122, yes, B, good. Doctrine of part performance, because that is not under B, it is under 53A. Match list 1 with list 2. Select the correct answers by using the codes given below. Now इनको आपको match करना है with the relevant provisions. जो भी okay. इस 123 पे आ जाइए। Okay, you guys are seeing 123 का C. No, it is B. है ना, 123 का B. एक बार क्रॉस चेक करिए। सी, सबसे पहले ए विल बी फोर्थ। मुसहर साहू जो है दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। सेकंड आ जाता है मेडिसन वर्सेस एंडरसन, दैट इज पार्ट परफॉर्मेंस। राम कुमार वर्सेस मैक क्वीन इज रिलेटेड टू सेकंड वन, दैट इज ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। एंड धनपति इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इट इज डी, आई थिंक। ओके, चलें आगे। इज इट क्लियर? यस, ओके। The definition of sale is contained in the Transfer of Property Act in which section? Sale की definition कौन से section में contained है? Very easy question. Yes, good. 54. Next आते हैं, under Transfer of Property Act, sale is a transfer of an interest in a specific immovable या right to enjoy immovable या ownership या none of the above. Sale में क्या transfer हो रहा है? Interest हो रहा है या right to enjoy हो रहा है? 125. Ownership. Good. Very good. It is transfer of ownership. According to Section 54 of Transfer of Property Act, a contract for the sale of immovable property create any interest, create charge, confer title, या a contract that sale of such property shall take place on terms settled between the parties. That's again a very easy question. 120.
6. Yes, good. D. It is D. Wait a second. There's some technical error, I think. Oh, okay, all right. Yes, we can continue that, but like only 4 to 5 questions were remaining. So that's it for today. कल हम continue करेंगे सेल से लेके and last तक का, okay? Like first part हो चुका है हमारा TPA का, कल remaining part हम complete कर देंगे पूरा जो भी है. Alright, I hope you like the session. See you tomorrow, same time.